नमः। ब्रह्मलीन श्री स्वामी ओंकारानंदाय नमः। Today let us take up Bhagavad Gita chapter 2 Sankhya Yoga shlokas 51 to 55. Repeat after me. Karmajam buddhi yukta hi, कर्मजं बुद्धियुक्ता हि, कर्मजं बुद्धियुक्ता हि, फलं त्यक्त्वा मनीषिणः, फलं त्यक्त्वा मनीषिणः, फलं त्यक्त्वा मनीषिणः, जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः, 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 पदं गच्छन्त्यनामयम्, पदं गच्छन्त्यनामयम्, पदं गच्छन्त्यनामयम्. Let us chant together. कर्मजं बुद्धियुक्ता हि, फलं त्यक्त्वा मनीषिणः, जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः, पदं गच्छन्त्यनामयम्. Now you chant. कर्मजं बुद्धियुक्ता हि, फलं त्यक्त्वा मनीषिणः, जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः, पदं गच्छन्त्यनामयम्. Listen to me. कर्मजं बुद्धियुक्ता हि, फलं त्यक्त्वा मनीषिणः, जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः, पदं गच्छन्त्यनामयम्. Repeat after me. यदा ते मोहकलिलं, यदा ते मोहकलिलं, यदा ते मोहकलिलं, बुद्धिर्व्यतितरिष्यति, 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 तदा गन्तासि निर्वेदम्, तदा गन्तासि निर्वेदम्, तदा गन्तासि निर्वेदम्. श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च, श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च, श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च. Let us chant together. यदा ते मोहकलिलं, बुद्धिर्व्यतितरिष्यति, तदा गन्तासि निर्वेदम्, श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च. Now you chant. यदा ते मोहकलिलं, बुद्धिर्व्यतितरिष्यति, तदा गन्तासि निर्वेदम्, श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च. Listen to me. यदा ते मोहकलिलं, बुद्धिर्व्यतितरिष्यति, तदा गन्तासि निर्वेदम्, श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च. Repeat after me. श्रुतिविप्रतिपन्ना ते, श्रुतिविप्रतिपन्ना ते, श्रुतिविप्रतिपन्ना ते, यदा स्थास्यति निश्चला, यदा स्थास्यति निश्चला, यदा स्थास्यति निश्चला, समाधावचला बुद्धिः, समाधावचला बुद्धिः, समाधावचला बुद्धिः, तदा योगमवाप्स्यसि, तदा योगमवाप्स्यसि, तदा योगमवाप्स्यसि. Let us chant together. श्रुतिविप्रतिपन्ना ते, यदा स्थास्यति निश्चला, समाधावचला बुद्धिः, तदा योगमवाप्स्यसि.
Now you chant. श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिः तदा योगमवाप्स्यसि. Listen to me. Shruti vipratipanna te yada stasyati nischala samadhavachala buddhihi tada yogamavapsyasi. Repeat after me. Arjuna uvacha. अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा स्थितप्रज्ञस्य का भाषा स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव समाधिस्तस्य केशव समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किं प्रभाषेत स्थितधि किं प्रभाषेत स्थितधि किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम् किमासीत व्रजेत किं किमासीत व्रजेत किम्. Let us chant together. स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम्. Now you chant. स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम्. Listen to me. स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम्. Repeat after me. श्रीभगवानुवाच श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् प्रजहाति यदा कामान् प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् सर्वान् पार्थमनोगतान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः आत्मन्येवात्मना तुष्टः आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते. Let us chant together. प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते. Now you chant. प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते. Listen to me. प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते. Listen to me all the 5 shlokas of the day. Karmajam buddhiyukta hi phalam tyaktva manishinaha janma bandha vinirmukta padam gacchantyanāmayam yada te moha kalilam buddhirvyatitarishyati tada gantasi nirvedam
श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिः तदा योगमवाप्स्यसि। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम्। श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। The wise immersed in equipoised mind renounce the fruits of their action. They become free from the bondage of birth and attain the blissful supreme state. When your mind is released from the turbidity of delusion, you have indifference to what has been revealed and what is yet to be revealed. When your intellect becomes firmly fixed and stable, not perplexed by conflicting doctrines, has become steadfast in the self, then you shall attain to yogic samadhi. Arjuna spoke, O Keshava, what is the mark of one who is steadfast in wisdom and merged in yogic samadhi? How does such a steadfast person speak? How does he sit? And how does he walk? Lord Krishna said, O Partha, when one renounces all the desires that enter the mind and is satisfied in the self by the self, he is said to be a man of steadfast wisdom. समबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्म से उत्पन्न होने वाले कर्म फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त होकर निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। जिस समय तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को भलीभांति तर जाएगी, उसी समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। जिस काल में शास्त्रीय मतभेदों से विचलित हुई तेरी बुद्धि निश्चल हो जाएगी और परमात्मा में अचल हो जाएगी, उस काल में तू योग को प्राप्त हो जाएगा। अर्जुन बोले, हे केशव, परमात्मा में स्थित स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य के क्या लक्षण होते हैं? वह स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? श्री भगवान बोले, हे पार्थ, जिस काल में साधक मन में आई संपूर्ण कामनाओं का भलीभांति त्याग कर देता है और अपने आप से अपने आप में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थिर बुद्धि कहा जाता है।